Hello guys, I am Umair Bhaur again with you with some information regarding RAW HM1000X, and I think HM1000 will also be similar, and some other models TM, BM will be similar. Please focus here. Please take it a close up. Here is our friend Richie from US state Missouri. So I received a personal message from him. What he says regarding RAW, he says, thanks for your videos. Do you think you could make a video of showing how to remove the hammer spring assembly and the trigger assembly, clean and lube them? What info isn't anywhere to be found. I was told the trigger assembly needs to be cleaned and lubed, or it could cause issues with consistency, maybe the hammer spring stuff too. So that at that time it is what date is, I don't remember. Anyhow, it's a few days back. I had replied him. In fact, I am in a bit short of time, but now I have got some time, so I thought that for Mr. Richie I should make a video, and I think some other people will also be, it may be helpful for those. What I have done just now, I have just removed the stock. This is the stock. I have removed the stock and the bottle, right? Now the next phase and the main phase about which our friend is asking, and that is removing the hammer spring and the trigger assembly. So I start here. Just see, this is just, I am removing the hammer spring, turning it anti-clockwise. Right, it is out. Okay, but here I will tell you that since my RAW is heavily modified, this thing, your RAW, if that is a stock RAW, that you will not get this thing. But you will get is, in fact, when you will take out this screw, and there your RAW will have this kind of cavity for this 5 mm Allen key, right? 5 mm Allen key. So it will insert here, and you can take it out. Similarly, the same way how I use this screwdriver, you will take it out through using this Allen key, and what will come out will not be this thing. This is the SSG anti-debounce device, but you will get this, right? Your stock RAW will have this 2 springs and this, and here a washer and all this setup, right? Now this is what you will find in your RAW. Okay, then come to next step. Now we cannot take out the hammer at this stage unless and until we don't remove the trigger, right? So now let's come to removing the trigger. With some pin, you can easily press it a bit like this. I should put something here under. You should keep light on. See, when you push these 2 pins, right, these pins come out, right, and your trigger assembly comes out as a one-piece assembly, right? It's very easy, there is no issue, right? And you can see I have lubed it. It is lubed, and now I will tell you that using what lubricants I have lubed it. And then there is hammer that will come out this. So this is very light hammer,
as I have told you in my previous video, it came so I mean difficultly out a bit. There is very little oil on it. Even then, it came difficultly because it is just 32 grams of hammer, while this is the original hammer of raw, that is around 76 gram to 80 gram with this anti hammer debounce, right? This, when you will get the hammer, this thing will be in this direction inside it, right? This also works as hammer debounce, but it's not that efficient, and it is so heavy that when you will put it, when you will just take the gun like this, it will come out. It's more than double the weight of the hammer I am using, right? So this is what you will get. Now this is the stock setup of I take it here, this is my setup, and this is the stock setup of raw, right? So you have to clean the internals with good, I mean there should be no grease, no debris, no dust, nothing. Everything should be clean. These parts should be clean, especially this and this. These parts should be clean. This hammer should be clean from inside where this works, right? Then you need to lube this a bit. If there is some dirt, you will remove it. Otherwise, you just need to apply what I prefer normally, that I tell you. I prefer a combination of this ballistol. Most of the quantity is, I can tell you that it is around 90% or 85% ballistol and 15% moly grease, right? When you mix these two items, so there you will get a very thin oil in which there will be a bit mixture of moly, and moly grease is very good for metal to metal contact, right? So where you have to apply it, please focus here. These are the contact points. These are the shear points, contact areas. This area, and whatever are the moving points and contacting points. All those points are to be lubed, right? Once you have lubed it, the similar thing you have to do with the similar proportion of ballistol and the moly grease with this and inside it. The little the better. The more you will put, it will create problem, right? So I'm not going to apply more on my this setup. I'm going to install it again, right? Just before you, like this, I install my setup here, okay? And just after installing it, what I have to do, I will install the trigger, right? If you see precisely on the pins, there is different shape on both end of the pins. One side is round and one is not that much round. So take the round side to put it in, right? So here you would go. So it goes in, right? Then you align this hole of pin and you put it in for a bit of and it goes in, right? And now I install my anti-hammer debounce like this, and it goes into like this, right? So you will install these parts on the similar manner and the trigger in the similar manner, and this your trigger will start working again,
hammer and trigger is working again. So thank you. I hope this helps. अच्छा जनाब, कुछ दोस्त ये कह रहे थे अमेरिका से मेरे कि मुझे उनको कुछ ट्रिगर असेंबली के बारे में मालूम करना है कि ट्रिगर को किस तरह से ल्यूब करना है और हैमर को किस तरह से ल्यूब करना है. सो फॉर दैट पर्पस ये हमारे दोस्त हैं रिची अमेरिका से. इन्होंने मुझसे कहा था कि थैंक यू फॉर योर वीडियोस. डू यू थिंक दैट कुड मेक ए वीडियो और शोइंग हाउ टू रिमूव द हैमर स्प्रिंग, कैसे हैमर स्प्रिंग को रिमूव करना है, असेंबली एंड द ट्रिगर असेंबली, और ट्रिगर को कैसे करना है, क्लीन एंड ल्यूब, देन उनको कैसे साफ करना है और ल्यूब करना है. दैट इन्फो इज एनीवेयर फाउंड, वो कहीं मौजूद नहीं है ये इन्फो. आई वॉज टोल्ड द ट्रिगर असेंबली नीड्स टू बी क्लीन करने की ज़रूरत होती है, वो कह रहे हैं, एंड ल्यूब, और ल्यूब करने की भी इट कुड कॉज इश्यूज विद कंसिस्टेंसी, मे बी द हैमर स्प्रिंग स्टफ टू. तो ये मतलब वो ये जानना चाह रहे थे कि इसको किस तरह से करना है और क्या इसका तरीक़ाकार होगा. तो ये यूनाइटेड स्टेट से, मिसूरी से रिची हैं हमारे दोस्त. उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था पर्सनल मैसेज पे, एयरगन नेशन पे. तो उनके लिए मैं ये बता रहा था, आप लोगों के भी शायद काम आएगा, कि सिंपली देखें इस स्क्रू को हमें निकालना है. ठीक है, ये मेरी मॉडिफाइड रॉ है. ओरिजिनल जो होगी स्टॉक रॉ उस पर ये इस तरह से स्क्रू होगा और ये 5 mm की एलन की इसमें लगेगी इसे निकालने के लिए. ठीक है, ये निकलेगा. मेरे पास जो मैंने बनवाया है वो स्क्रू ड्राइवर से निकलता है और ये जब निकल आएगा, ठीक है, तो ये SSG एंटी हैमर डिबाउंस है. रॉ में नॉर्मली जब कंपनी से आती है तो ये सेटअप होता है, ये चीज़ बाहर निकलेगी. ठीक है, वो नहीं निकलेगा, इस तरह का सेटअप बाहर निकलेगा. ठीक है, और स्क्रू जो बाहर आएगा वो इस तरह का बाहर आएगा. ठीक है, तो उसके बाद अगर हमने ट्रिगर को रिमूव करना है, ट्रिगर को, ये ट्रिगर पिन्स हैं यहाँ लगी हुई, 2 पिनें हैं, इन्हें आप हल्का सा टैप करके इन्हें निकालेंगे लाइक दिस और लाइक दिस. ठीक है, पिनें बाहर आ गई, ये हमारी ट्रिगर असेंबली बाहर आ गई 1 पीस में. ठीक है, ये हमारा ट्रिगर बाहर आ गया, ये दोनों पिनें बाहर आ गई. इसके बाद हम हैमर को निकाल सकते हैं. ये हैमर बाहर आ गया. ठीक है, अच्छा, ये मेरा मॉडिफाइड हैमर है जो कि सिर्फ 32 ग्राम्स का है. ये बहुत लाइट वेट हैमर है, 32 ग्राम्स का है कि मॉडिफाइड है गन. ये रॉ का जो असली हैमर है, आपके पास जो चीज़ निकलेगी वो इस तरह से निकलेगी. ये अराउंड 76 to 80 ग्राम्स है और ये इसके अंदर ये इनर्शिया वेट होता है इस तरह से. ठीक है, और ये सारा सेटअप इस तरह से ऑपरेट करता है. ठीक है, ये चीज़ सारी इसके अंदर जाती है. तो बेसिकली आपके जब रॉ आप खोलेंगे तो ये सब चीज़ें निकलेंगी और इनको साफ़ करना है, ट्रिगर को साफ़ करना है अच्छे किसी WD-40 या किसी और ऐसी चीज़ से, किसी पेट्रोलियम की चीज़ से, कि अच्छी तरह से इनमें से डस्ट वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं, ड्राई ल्यूब वगैरह, वो सब निकल जाए. उसके बाद ट्रिगर के ये जितने कॉन्टैक्ट एरियाज़ हैं जिन्होंने आपस में टच होना है, ये सीयर के ये एरिया और अंदर के जो मूविंग पार्ट्स हैं, उनको हमने ल्यूब करना है साफ़ करने के बाद. सिमिलरली इन स्प्रिंग्स वगैरह को हमने ल्यूब करना है सफाई के बाद. यहाँ ल्यूब करना है, यहाँ ल्यूब करना है. हैमर को आउटर एंड इनर ल्यूब करना है क्योंकि इनर में ये भी जाना है और ये स्प्रिंग ने भी जाना है अंदर. ठीक है, तो ये ल्यूब किस चीज़ से करना है, मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है. ये बेलिस्टॉल, अराउंड 85% बेलिस्टॉल और 15% इसमें अगर मॉली ग्रीस शामिल करके एक बना लिया जाए महलूल सा, वो उसकी बहुत थिन लेयर अगर मैं अप्लाई करूं तो वो कंसिस्टेंसी भी देता है और मतलब ल्यूबिंग भी अच्छी होती है और मॉली की वजह से वेयर एंड टेयर भी नहीं होती. ठीक है, बहुत से लोग ड्राई यूज़ करना चाहते हैं लेकिन दैट इज़ अप टू देम. मैं इन सब पार्ट्स पे यही कॉम्बिनेशन अप्लाई करता हूँ. और इसको वापस डालने के लिए सबसे पहले आप हैमर डालेंगे. मैंने ऑलरेडी ये हैमर डाल दिया है. हैमर ऑल द वे इन, हैमर डल गया है. हैमर डालने के बाद नेक्स्ट स्टेज ट्रिगर असेंबली. ट्रिगर असेंबली
कि आप पिनों को देखेंगे, राउंड शेप है एक साइड पे और एक साइड पे राउंड नहीं है। जहाँ राउंड है वो शेप, ज़रा लाइट आगे लाइएगा, आपने यहाँ होल अलाइन करना है और राउंड शेप से आपने इसको इंसर्ट करना है। ये पिन अंदर चली गई। ये दूसरी पिन है, इसको भी इसी तरह से हमने इसको भी अलाइन किया और ये पिन भी अंदर चली गई। ठीक है जी। इसके बाद आप तो ये वाला सेटअप लगाएंगे, लेकिन मेरे पास क्योंकि ये SSG बना हुआ है, मैं अपना सेटअप इसमें लगाता हूँ इस तरह से। और इस तरह से ये गन कॉक हो गई और ये कॉक हो गई और ये ट्रिगर रिलीज़ हो गया, हैमर रिलीज़ हो गई, ये कॉक हो गई। ये तो ये ऑपरेट करना शुरू कर देगी। तो ये चीज़ें हैं जी जो बेसिकली हेल्पफुल होती हैं। तो आई होप कि ये मुफीद हुआ होगा आप लोगों के लिए। और इस तरह की वीडियोस जो हैं, जो लोग डिमांड करते हैं कि ये चीज़ नहीं मिसिंग है, कहीं से नहीं मिल रही, तो आई होप कि सबको इसका फ़ायदा होगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस आइंदा भी आती रहें। थैंक यू जी।